Welcome back, students. This is Ayesha Khan, your UGC NET English faculty at Super Coaching by Testbook. Welcome to another session wherein we are going to continue our preparation for the December 2024 exam. Now, those of you who are joining for the first time, let me just remind you that this is a question series wherein we are solving the previous year papers. तो आपका previous year paper series चल रहा है. 2024-2023 को हम टैकल कर चुके हैं. अच्छा, दिस इज अ पेपर फ्रॉम 2022. आपका दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, बिफोर आई बिगिन लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू कि आपकी जो फ्री क्लासेस हैं वो किस टाइम पर होती हैं और कहाँ होती हैं. ठीक है, सो योर फ्री क्लासेस टेक प्लेस एट 12 noon ऑन यूट्यूब चैनल. जैसे अभी आपकी क्लासेस हो रही है ऑन 3 days अ वीक, दैट इज ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे. ऑल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेस होती हैं. Then you have your classes at 2 p.m. Please make sure to attend these classes. जो आपकी free master classes होती हैं, these take place on the app of Testbook and these are very very important classes. इसके बाद आपकी classes होती हैं at 6 p.m. on the English channel of Testbook Super Coaching. So make sure to go and subscribe to this channel. यहाँ पे आपकी classes होती हैं on 2 days a week, which is Wednesday and Friday. Here we are running a series called literary terms. तो आपकी literary terms या literary devices वाली जो series है वो अभी run हो रही है on this particular channel. This is the schedule of your free classes. ठीक है, good morning, good morning. I've got James is here, Ram is sorry, this is Rain is here. Okay, Rain, Kalpana, Shaheen, Deepa, Harish, Pinky, Ranjit, Meenakshi, Ankita is here as well. Good morning, Monica. How are you people? How are you? Okay, I think we're having a class after a very very long time. So first of all, I would like to know how you people have been, how you celebrated your Diwali. वो सब मुझे बता दीजिए. Then we'll begin with the session. हाँ जी, quickly. And before we begin, also make sure to like this session. हाँ जी, how did you people celebrate the Diwali? Was it a good break that you had? Good morning, good morning. I've got somebody called Future Dreams. Okay, Future Dreams. ठीक है. चलिए. With that, we will begin with today's session. I hope my voice is audible and it's not breaking at all. If it does, please let me know. ठीक है. चलिए. With that, we will begin with today's session. बच्चे, your first question for today, which is a continuation of the December 2023 paper. I'm sorry. December 2023 में जो आपका UGC नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था फॉर इंग्लिश लिटरेचर, उसके फर्स्ट 70 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, those of you who missed those questions, जो आपने क्लासेस मिस कर दी हैं, you can go and watch all these classes in recorded mode. ठीक है, आपके पास क्लासेस कहाँ मिल जाएंगी? आपको YouTube पे मिल जाएंगी. कुछ क्लासेस आपको मास्टर क्लासेस मिल जाएंगी which are also free to access. ठीक है, चलिए. All right. With that, we will begin with today's class. Let's just begin with today's class. The first question for you people for today is Transcendentalist Club or Transcendental Club was a group of American intellectuals for philosophical discussions. Now, which text is considered a seminal text? In fact, this text is considered one of the foundational texts of the Transcendentalist movement. Your options are Emerson's Nature, Thoreau's Walden, Walt Whitman's Leaves of Grass, and Thoreau's Civil Disobedience. Please start answering the question. Monica says, ma'am, we are fine. How are you? I'm good, Monica. Thank you for asking. Ankita says, ma'am, enjoyed very much. Okay, great. ठीक है. I hope all of you had a good Diwali. Now let's just get back to studying because आपका जो एग्जाम है, जो टारगेट है, वो अभी आपको भूलना नहीं है. December is very close. I do expect कि December के end में या January के beginning में आपका एग्जाम हो जाएगा. So all these previous year questions will help you there. ठीक है, चलो. Okay, most of you say, ma'am, the answer should be one, which is Emerson's Nature, which is actually your correct answer. So who was Emerson? Who was Emerson, students? He was an American poet. His essay called Nature is considered one of the foundational texts of Transcendentalist movement. Now, what is Transcendentalism? हम ये तो कह रहे हैं कि Transcendentalism जो movement था American literature में, उसके जो एक foundational text है, seminal text है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है Nature by Emerson. But Transcendentalism था क्या बिलीफ है, क्या फिलोसफी है? देखो, ट्रांसेंडेंटलिज्म वाज अ फिलोसफी जो क्या मानती थी
that humans have the ability to transcend their material being. Humans क्या कर सकते हैं, अपनी material existence को transcend कर सकते हैं, they can go beyond it. तो जो भी हमारी material existence है, वो हमारे ऊपर जो भी limits impose कर सकती है, humans have the capability to go beyond these. ठीक है, ये movement तीन चीज़ों में believe करता है, ये philosophy तीन चीज़ों में believe करती है. The first thing is the inherent goodness of human beings. The first thing is the inherent goodness of the human beings or of the people. Transcendentalists used to believe that human beings at their core are good people. They are good people who have good intentions. Okay? Second belief is the importance of self-reliance. Now, what is self-reliance? The idea that humans are dependent only on themselves. They can rely on themselves and accomplish everything that they want to accomplish. That is the idea of self-reliance. And third is the divinity of nature. Transcendentalism as a movement, as a philosophy, used to believe that nature is divine, nature is supreme, nature is all-encompassing. These are the three central ideas of the philosophy of Transcendentalism, right? And who is considered one of the founding fathers of Transcendentalist movement? His name was Emerson, Ralph Waldo Emerson, right? And his essay which was published in the year 1836, which was called Nature, is considered one of the foundational works of Transcendentalism. तो ये आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, ये आपका correct answer हो जाएगा. चलिए, with that we will move on to the next question. चलो, next question is, you need to arrange these works, most of them by Indian writers, in the orders in which they were published. कौन-कौन से works आपके पास आ जाते हैं? Your works are Chitra Banerjee Divakaruni's The Mistress of Spices. Chitra Banerjee Divakaruni, who is mainly known for her novel. The novel is called The Palace of Illusions. I hope you people already know the title. The novel is called The Palace of Illusions. ठीक है, it is a retelling of the Mahabharata from the point of view of Draupadi, right? But उनकी एक और novel है called The Mistress of Spices. The next work is Anand Giridhar Das's novel work called India Calling, an intimate portrayal of a nation's remaking. Then you have V.S. Naipaul's India, a Wounded Civilization, followed by Bharati Mukherjee's Desirable Daughters. यही work हम अभी discuss कर रहे थे booster class, जो आपकी booster course की class थी अभी थोड़ी देर पहले, right? Then you have Salman Rushdie's novel Midnight's Children. So you have 5 novels by 5 prominent Indian writers, and you need to arrange these 5 novels in accordance to the years in which they were published. ठीक है, start with the one which was published the earliest and then move on. ठीक है, चलिए, good morning. I've got Pratibha is here as well. Good morning Pratibha. हाँ जी, good afternoon Ravi as well. चलिए, क्या आंसर हो जाएगा? Let me just give you a hint. आप कहाँ से start करने वाले हैं? You're gonna begin with V.S. Naipaul's work, India, a Wounded Civilization. You're gonna begin with Vidyadhar Naipaul's work, which is called India, a Wounded Civilization, and then you will move on. ठीक है, exactly. Most of you say, ma'am, the answer should be B, which is your correct answer. C, sorry, ठीक है, which is your correct answer. सबसे पहले आपके पास आ जाएगा V.S. Naipaul का work है India, a Wounded Civilization. Please remember, this particular work is actually a part of his India trilogy. इसी trilogy में इस work के अलावा 2 works और आते हैं, ठीक है, V.S. Naipaul. Not a very flattering representation of India in this particular work, ठीक है. Then you have Salman Rushdie's 1981 novel Midnight's Children, followed by Chitra Banerjee Divakaruni's novel Mistress of Spices. Then comes, good afternoon Shivani, good afternoon. Then comes your novel Bharati Mukherjee's novel called Desirable Daughters, followed by lastly you have this work called India Calling. See, V.S. Naipaul's work was published in the year 1977, followed by Rushdie's work in 1981, Rushdie's magnum opus. What is magnum opus? Masterpiece work, best work, ठीक है. Then you have Chitra Banerjee's work called The Mistress of Spices, published in 1997, followed by Bharati Mukherjee's Desirable Daughters, published in 2002, and lastly you have India Calling, published in the year 2011, the most recent publication amongst the given works. ठीक है, good noon. Simran is here as well. हाँ जी, चलिए, next question is which among the following novels of Thomas Hardy was first published in an abridged form as Heart's Insurgent? Now, those of you who do not know what abridged form is,
what abridged form is, see, sometimes when novels are published, some portion of the novel is removed, some portion of the novel or any piece of literature for that matter, right, some portion of the novel is removed. So you can say abridged form is the shortened form of any work, any piece of writing, the shortened form of any piece of writing. So when this novel was initially published, it was published in an abridged form, in an abridged form, ठीक है. And when this was published in an abridged form, the title was not the original title as we know it now. The title was Heart's Insurgent. The title was Heart's Insurgent. तो कौन सी नॉवल है थॉमस हार्डी की जो इनिशियली जब पब्लिश हुई थी, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में पब्लिश हुई थी, थोड़ी सी क्रॉप्ड थी, थोड़ी सी क्लिप्ड थी, कुछ पार्ट्स रिमूव्ड थे, तो उसका टाइटल क्या था? हार्ट्स इंसर्जेंट. जब ये दोबारा पब्लिश होती है कंप्लीट फॉर्म में, तब इसका टाइटल चेंज हो जाता है. जो अभी हमें टाइटल पता है वो टाइटल बन जाता है. द आंसर हियर विल बी, मोस्ट ऑफ यू से मैम द आंसर शुड बी जूड द ऑब्सक्योर, विच इज एक्चुअली योर करेक्ट आंसर. जूड द ऑब्सक्योर में आपके पास कैरेक्टर आते हैं, प्रोटैगनिस्ट आते हैं, द टाइट्यूलर जूड हुज नेम इज Jude Folly, who is a working class man. He's a working class man, but although he comes from a working class, he aspires to become a scholar, right? He aspires to become a scholar. इनके एकेडमिक परस्यूट्स के बारे में ये जो इनका जो स्टोरी है कॉल्ड जूड द ऑब्सक्योर, ठीक है. आपकी नॉवल पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1895 में आपकी ये नॉवल पब्लिश हुई थी. यही नॉवल पहले पब्लिश हो चुकी थी, बट इन अ शॉर्टेंड फॉर्म द नॉवल वाज कॉल्ड बैक देन इट वाज कॉल्ड हार्ट्स इंसर्जेंट. सी, The novel by Thomas Hardy was first published in an abridged form. अब आपको पता है abridged form क्या होता है? As Heart's Insurgent. Then it was renamed Jude the Obscure when it was published in a complete form in the year 1895. Jude the Obscure tells a tragic story of the titular character whose name is Jude Folly. ठीक है? Jude Folly, who is a working class man, but he wants to become a scholar. Good afternoon, Ravi. Good afternoon. चलिए, next question for you people is, identify the correct option in Julia Kristeva's definition of Cora. Liminal space, बच्चे liminal क्या होता है? Liminal is on the thresholds, या आप कह सकते हो on the boundaries, या आप कह सकते हो on the margins, को बोलते हैं liminal, ठीक है. कोरा की डेफिनेशन क्या है क्रिस्टेवा की? Liminal space of the marginalized, non-expressive totality created by the bodily drives. The Cora has no fixed identity or it precedes the linguistic sign. Which of these correctly defines Julia Kristeva's concept of Cora? Please remember, Kristeva ने अपना जो ये concept है कोरा का वो कहाँ से borrow किया था? She borrowed it from Plato's concept. ठीक है, चलिए, प्लेटो का टर्म था कोरा, देन शी बोरोड इट एंड डिफाइंड इट इन हर ओन वे. तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या टर्म्स हैं जो उससे फिट होती हैं? हाँ जी, दैट्स योर क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ यू से मैम द आंसर शुड बी सी. ठीक है, देखो सबसे पहले कोरा होता क्या है. क्रिस्टेवा सेड, जब भी कोई चाइल्ड अपने इनिशियल ईयर्स में होता है, इन्फेंट होता है, राइट, बिफोर ही स्टार्ट्स स्पीकिंग, बिफोर ही स्टार्ट्स हैविंग लैंग्वेज एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, before he enters the world of language, तो technically Cora is a pre-linguistic stage, ठीक है. आपके लैंग्वेज में एंट्री से पहले वाला ये स्टेज है, ठीक है. इट्स कॉल्ड कोरा. ये आपका फर्स्ट स्टेज है ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. कौन है ये? जूलिया क्रिस्टेवा. देखो तो आंसर क्या बन जाएगा? लिमिनल स्पेस भी नहीं होगा, स्पेस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड भी नहीं होगा. कोरा हैज नो फिक्स्ड आइडेंटिटी, विच इज करेक्ट, ठीक है. When you are a child, यही बात हमारे किसने भी की थी? हमारे लका ने भी कही थी, ठीक है, कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, he looks into the mirror, he is unable to form a sense of identity, है ना. तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? कोरा बोलते हैं, ठीक है. It precedes the linguistic sign, it has no fixed identity, it is a non-expressive totality. ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है. Therefore your answer will be C, D and E, ठीक है. क्रिस्टेवा का कॉन्सेप्ट है, she borrowed it from who? From Plato. The first 6 months of an infant's life, उसको वो कहती हैं कि ये कोरा है. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज आता है आपके पास, ठीक है. जो फर्स्ट 6 months होंगे चाइल्ड की लाइफ के, दैट विल बी कोरा. ऑलराइट, दैट विल बी कोरा. सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट स्टेज
0 to 6 मंथ्स का ये स्टेज हो जाएगा ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। आई होप यू पीपल रिमेंबर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के स्टेजेस आपके फ्रॉइड ने भी दिए हैं, ठीक है, आपके लकान ने भी दिए हैं। सिमिलरली Kristeva also talked about one such stage. She called it Cora, a term that she borrowed from who? From Plato. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी जस्ट टेल यू दैट बिसाइड्स कवरिंग प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर एग्जाम, सम ऑफ यू आर आल्सो टारगेटिंग द जून 2025 एग्जाम, ठीक है। तो उसका जो आपका बैच है, फाउंडेशन कोर्स है, जहाँ पे आपकी पेड क्लासेस होती हैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से। आपकी जो यूट्यूब क्लासेस हैं थोड़ी अनस्ट्रक्चर्ड रहती हैं, फ्री जितनी भी आपकी फ्री क्लासेस हैं, यूट्यूब हो चाहे वो मास्टर क्लास हो, लेकिन अगर आपको एक तरीके से काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से अलॉन्ग विद द नोट्स क्लासेस सबके साथ प्रिपरेशन करनी है, सो यू हैव अ फाउंडेशन कोर्स या फिर जिसको आप पेड कोर्स कहते हैं, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून फॉर द जून 2025 एग्जाम, ठीक है, जून 2025 एग्जाम। लेट मी जस्ट टेल यू, इस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं, ऑब्वियसली आपको पेपर 2 तो मिलेगा ही, ठीक है, आपको पेपर 2 दैट इज इंग्लिश की क्लासेस प्लस नोट्स तो मिलेंगे ही, बट अलॉन्ग विद दैट you will also get English के तो आपको मिलेगा ही, but along with that you will also get access to all the live plus recorded classes of paper 1 as well। तो आपका complete package है। not just that, जितने भी आपके previous year papers हैं, previous year questions हैं, mock test series है, ठीक है, वो सब कुछ आपको मिल जाता है in the same course, ठीक है। how do you enroll in this course, मैं आपको बता भी देती हूँ कि आप enroll कैसे करेंगे। see, ऑल यू नीड टू डू इज, जो अभी आपकी लाइव क्लास चल रही है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ठीक है। लेट मी जस्ट टेल यू, देखो ये आपका चैनल है, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में नहीं लाइव में ही चले जाओ, ठीक है, लाइव में जाइए, आज की क्लास आपको मिल जाएगी। ये आपकी क्लास चल रही है अभी फिलहाल, ठीक है, गो हियर, ये देखिए आई कैन सी माई सेल्फ, ठीक है। चलो, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे क्लिक हियर टू गेट द ऑफर। वंस यू क्लिक हियर, आप क्या करेंगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द टेलीग्राम, जो आपका टेस्ट बुक का ऐप है। टेस्ट बुक के ऐप पर आप आएंगे, ठीक है, जितना भी आपका इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर लिस्टेड हैं, ठीक है, देख लो। टिल दिसंबर 2024 आपके पास एक कोर्स आता है विद बुक्स विदाउट बुक्स। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप विद बुक्स लेना चाहते हैं या फिर विदाउट बुक्स लेना चाहते हैं, विद नोट्स लेना चाहते हैं, विदाउट नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। नोट्स आपको क्लास में भी मिलते हैं। देन यू हैव अनदर वन, जो आपका अभी मैं बात कर रही हूँ, दैट इज योर जून 2025 एग्जाम। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यू कैन टेक द कोर्स विद बुक्स और यू कैन टेक द कोर्स विदाउट बुक्स, ठीक है। अभी जो प्राइसेस हैं बच्चे, यू कैन ऑल्सो गेट अ डिस्काउंट ऑन दीज प्राइसेस। क्या करेंगे आप, यू विल गो टू अप्लाई कूपन, यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाकर यू विल टाइप इन द कूपन कोड विच इज AYESHA, आयशा के आप टाइप करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड यू विल सी जो आपके कोर्स के प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। सो मेक श्योर टू यूज द कोड एंड यू विल गेट डिस्काउंट ऑन ऑल दीज कोर्सेज। This is how you can get all these courses if you want to get enrolled in my paid batch, ठीक है। चलिए, with that we will go back to our classes. next question for you people is, मैं आपको कोड एक बार फिर से बता देती हूँ। the code that you can use is, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, is आयशा, ठीक है, ये कोड यूज कर लेना, you will get a discount on the fee prices. चलिए, with that we will move on to the next question. Your next question is, Roland Barthes in his introduction to the structural analysis of narratives proposed there are 3 levels of narrative structures. What are the 3 levels of narrative structures as proposed by Roland Barthes? 3 levels of narrative structures. 3 levels of narrative structures as proposed by who? By the French philosopher. His name is obviously, his name is Roland Barthes. Roland Barthes. कौन से तीन लेवल्स हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर्स के जिनकी बात की थी रोलैंड बार्ट्स ने? हाँ जी, स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन बच्चे, प्लीज स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। चलिए, all right, this is question number 75 for you people and most of you say ma'am the answer should be A, B and C. No, that is your incorrect answer. देखो आंसर क्या हो जाएगा, you have functions as one of the levels, you have actions as one of the levels and you have narration as one of the levels. So कौन कौन से 3 levels हैं?
function, action, narration. FAN. Try to learn it with this acronym. FAN. इसी ऑर्डर में लर्न करेंगे फंक्शन, एक्शन एंड नरेशन. These are the three levels of the narrative as given by Roland Barthes. In which work? The work was called Introduction to the Structural Analysis of Narratives. The publication year was 1966. That is before he publishes essay The Death of the Author. Before he publishes essay The Death of the Author. देखिए, in his work called Introduction to the Structural Analysis of Narratives, published in the year 1966, Barthes identified three main narratives, which are function, action and narration. अब ये तीनों चीजें हैं क्या? इन्होंने कहा किसी भी narrative में जो smallest unit है उसको उन्होंने कह दिया ये function है. Now, all these smallest units come together to form the action. Action क्या है? जितने भी characters हैं उनके जो gestures हैं, जो actions हैं, ठीक है? So functions are the smallest units of any narrative, and together all these functions combined form the action. ठीक है? अब जब छोटे छोटे actions एक साथ आ जाते हैं, when you have a series of actions, when you have a sequence of actions, that becomes a narrative. So you have three levels of narratives, which are function, smallest unit. Functions together make up an action, and a series of actions or a sequence of actions will make up the complete narration. These are the three levels of any narrative according to Roland Barthes. ठीक है? चलो. With that, we move on to the next question. Arrange these following works according to the years in which they were published. The works are Michel Foucault's The Order of the Things, Mohanchand Karamchand Gandhi's Hind Swaraj or the Indian Home Rule, Stephen Greenblatt's The Swerve, How the World Became Modern, Donna Haraway's When Species Meet, and Tony Bennett's Formalism and Marxism. Please pay attention. I've seen some of you writing and spelling this as Michael. This is not Michael Foucault. No, the correct name is Michel. See, this is how we spell it. Michel Foucault. This is the correct spelling. ठीक है? It's not Michael Foucault, it's Michel Foucault. Alright? चलिए. तो आपके पास 5 works आ गए हैं from different theories. You have Michel Foucault's Order of Things, you have Gandhi's Hind Swaraj, you have Greenblatt's work called The Swerve, then you have Haraway's called When Species Met, and lastly you have Tony Bennett's work called Formalism and Marxism. आपको इनको arrange करना है according to the years in which these works were published. You will begin with which work? Which work will you begin with? आप सबसे पहले start करेंगे with Gandhi's Hind Swaraj, followed by Michel Foucault's Order of Things, then comes Tony Bennett's Formalism and Marxism, then you have Haraway's When Species Meet, and finally you will have Greenblatt's work called The Swerve. Publication years देख लेते हैं. सबसे पहले आपके पास आएगा, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले आपके पास आएगा गांधी का वर्क. ठीक है? आपका पास गांधी का वर्क आता है इन द ईयर 1909. देन यू हैव फुकोस वर्क इन 1966. ग्रीनब्लैट का जो आपका वर्क है द स्वर्व वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2011, फेयरली रीसेंट है ये. हैरवे का जो आपके पास वर्क है व्हेन स्पीशीज मीट 2000 का वर्क, 2008 का वर्क है. एंड टोनी बेनेट का जो वर्क है फॉर्मलिज्म एंड मार्क्सिज्म वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1979. ठीक है? चलिए, all right. Next question for you people is An Introduction is a poem by Kamala Das about what? Kamala Das, an Indian poet, right? An Indian poet, primarily known for her confessional poetry. What is confessional poetry? पोइट्री जिसमें जो टोन है, जो थीम्स हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेट सब्जेक्ट्स पे होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअलिटी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ कन्फेशनल पोइट्री. साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज, साइकोलॉजिकल इलनेसेस, ठीक है, इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ confessional poetry. Mainly a lot of taboo subjects, a lot of subjects which are considered taboos, right? These are discussed in confessional poetry, which is also associated with the poetry of Sylvia Plath. Now, कमला दास इंडियन राइटर तो हैं ही, इंडियन पोइट तो हैं ही, मगर उन पोइट्स में से हैं जिनकी पोइट्री में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो थीम्स हैं, बहुत ही अनकन्वेंशनल हैं
बहुत ही ज़्यादा radical हैं, and yet she was not hesitant to talk about these themes. She would not shy away from subjects like sexuality. She would talk about these things in her poetry without any hesitation, right? उनकी poem है called An Introduction, ठीक है? An Introduction में वो क्या करती हैं? She talks about, obviously ये जो आपकी poet हैं काफ़ी ज़्यादा radical हैं, काफ़ी ज़्यादा anti-establishment है, काफ़ी ज़्यादा जो modes हैं, जो societal expectations हैं, gender roles हैं, उनको question किया करती थी अपनी poetry में, ठीक है? तो इनकी जो poetry है, it was very much a poetry of protest against what? Protest against the societal modes and cultural norms, ठीक है? So therefore the poem An Introduction is actually a form of resistance and protest. In fact, all her poetry, आप देखेंगे जितनी भी इनकी poems हैं, all these poems are actually poems जिसमें protest की theme, rebellion की theme, resistance की theme काफ़ी ज़्यादा है. ये कोई भी gender roles को accept नहीं किया करती थी, ठीक है? This is Kamala Das for you. See, in An Introduction by Kamala Das, the poet's bold and unapologetic expression of her individual identity and rejection of societal norms. Therefore, आप कह सकते हो protest की poetry भी है, ठीक है? Protest की poetry भी है, because she rejects the societal norms and the expectations of society, ठीक है? चलिए, next question is, you need to match these works with their writers. The works are Waiting for the Mahatma, So Many Hungers. Now I hope you people remember So Many Hungers. हम multiple times discuss कर चुके हैं कि So Many Hungers किसका work है. This is the debut novel. This is the first novel by a certain author. I will not name the author. Sword and the Sickle and Distant Drum. These are the 4 novels. You need to match these with their writers. All of them are Indian writers. Your options are Bhavani Bhattacharya, R.K. Narayan, Manohar Malgonkar, and you have Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand. Can you start matching these? Exactly. Khushbu says, ma'am, her complete name is Kamala Suraya. Kamala Suraya. Exactly. चलिए, देखो सबसे पहले हम मैच कर लेते हैं द इजीएस्ट वन हियर, ठीक है? लेट्स मैच द इजीएस्ट वन हियर. वी विल मैच वेटिंग फॉर महात्मा विद आर.के. नारायण. लेट्स आल्सो मैच सो मेनी हंगर्स विद भवानी भट्टाचार्य, है ना? एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ यू से. अच्छा, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. हाउ कम? समबडी सेज मैम 4 होगा, रंजीत सेज मैम 1 होगा, ठीक है? रवि सेज मैम 1 होगा, ठीक है. हाँ, आंसर तो आपका 1 ही होगा. देखो, वेटिंग फॉर महात्मा इज अ नॉवल बाय आर.के. नारायण, ठीक है? देन यू हैव सो मेनी हंगर्स, द डेब्यू नॉवल, द फर्स्ट नॉवल बाय भवानी भट्टाचार्य, followed by the Sword and the Sickle, which is a novel by Mulk Raj Anand, the novelist of The Coolie and the Untouchable, ठीक है? देन फाइनली आपके पास डिस्टेंट ड्रम आता है, विच इज एक्चुअली अ वर्क बाय मनोहर मालगोनकर. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज योर करेक्ट आंसर. देख लो कैसे, ठीक है? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दीज वर्क्स. योर वर्क्स आर Simon Gikandhi's Maps of Englishness, Franz Fanon's The Wretched of the Earth, Bhabha's Nation and Narration, Ernest Gellner's Nations and Nationalism. Look at the titles, very similar titles but distinct works by different writers. Then you have Robert Young's Colonial Desire. All these works come from post-colonial writing, post-colonial theory, right? Race and post-colonial theory. So you need to arrange these works according to the years in which they were published. किस works आपके पास आ जाते हैं? You have Simon Gikandi, you have Franz Fanon, Bhabha का work है, Ernest Gellner का work है, and you have Robert Young as well. हाँ जी, please start answering the question. Those of you who haven't liked this session, please make sure to like this session as well, ठीक है? You can also share this session with any of your friends who are also preparing for your December exam, या फिर अगर वो अपना 2025 का जो एग्जाम का जो अटेम्प्ट है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? Okay, most of you are giving me the answer which is C, ठीक है? देख लेते हैं कैसे. देखो, सबसे पहले वी विल बिगिन विद फ्रांस फैनॉस वर्क्स द रेचेड ऑफ द अर्थ, ठीक है? मुझे जल्दी से रेचेड ऑफ द अर्थ का पब्लिकेशन ईयर बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? उसके बाद आपका आता है अर्नेस्ट गेलनर का वर्क नेशंस एंड नेशनलिज्म. अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग याद रखें कि भाभा का टाइटल है नेशन एंड नैरेशन, बट गेलनर का टाइटल है नेशंस एंड नेशनलिज्म, ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है भाभा का वर्क नेशन एंड नैरेशन, फॉलोड बाय रॉबर्ट यंग्स कॉलोनियल डिजायर, एंड सबसे लास्ट में आपका आएगा साइमन गिकांडी का वर्क मैप्स ऑफ इंग्लिशनेस.
मैप्स ऑफ इंग्लिशनेस। सबका ही क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, देख लेते हैं एक बार ईयर्स, ठीक है। We will start with what? We will start with Frans Fanon's works, Wretched of the Earth. I think इसका publication year सबको पता है, 1961. Then you have Gellner's work, 1983, followed by Homi K. Bhabha's work, ठीक है, Nation and Narration. Then you have Robert Young's Colonial Desire, published in 1995, and then you have Simon Gikandi's Maps of Englishness, published in the year 1996. 1996. ठीक है, try to learn these works in this order here itself. Try to learn these works in a chronological order here itself. ठीक है, chronology of these works. All right. नेशन एंड नरेशन बाय होमी के भाभा 1990. ठीक है, कुछ वर्क्स आई नो, कुछ वर्क्स आपके लिए फेमिलियर थे, जैसे कि आपको पता होगा फ्रांस फानो का ये पता था, आपको होमी के भाभा का ये पता होगा, जो बाकी वर्क्स हैं वो आप लर्न कर लीजिए अभी, ठीक है, along with the publication years, along with the subtitles as well. Maps of Englishness का subtitle क्या है? Writing Identity in the Culture of Colonialism. Subtitles are also very important. Next question. The term Gynocriticism refers to what? Now, all of us know that the term was given by who? The American feminist thinker. The American feminist theorist. The American feminist theorist. ठीक है, क्या नाम है उनका? Her name is एलेन शोवाल्टर. एलेन शोवाल्टर का आपका कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड gynocriticism. Now, as it is evident from the term itself, the first part of the term is gyno. ठीक है. So, the term talks about what? Which of these is correct definition of the term gynocriticism given by Elaine Showalter? Elaine Showalter, exactly. Ranjit says, ma'am, Elaine Showalter, which is your correct name, but you need to tell me the definition. Which of these definitions best describes this particular term here? हाँ जी. हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा? मोस्ट ऑफ यू से मैम द आंसर शुड बी डी, विच इज प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ राइटिंग्स बाय women on women. See, the key term here is writings by women on women, therefore gynocriticism, writings produced by men, ठीक है, about women and the experiences of womanhood. ये आपका टर्म है. एलेन शोवाल्टर, she was an American feminist thinker. She is an American feminist thinker, I'm sorry. and उनका ये कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है. चलिए, आई थिंक विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम कहाँ करने वाले हैं? वो रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम मास्टर क्लास में करेंगे. लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, आपकी मास्टर क्लासेस होती हैं एट 2 PM. ठीक है, 2 PM आपकी रोज मास्टर क्लासेस होती हैं. प्लीज मेक श्योर टू कनेक्ट मी विद मी ऑन द मास्टर क्लासेस. ये मास्टर क्लासेस आपकी फ्री रहेंगी और इनमें जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ट्यूसडे टू सैटरडे रोज आपकी ये क्लासेस होती हैं. दीज आर फ्री क्लासेस. कैसे आप इनको एक्सेस कर सकते हो? वैसे तो आपके पास टेलीग्राम पे लिंक आ ही जाता है, तो टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेंगे आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है, 20 मिनट्स बिफोर द क्लास बिगिंस. अगर फिर भी नहीं मिलता है, सिंपली क्या करेंगे, गो टू द क्लास जो अभी आपकी चल रही है, क्लास में जाइए. ठीक है, क्लास में जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मास्टर क्लास का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिल जाएगा आपको? डायरेक्ट लिंक. सी सेज ज्वाइन फ्री मास्टर क्लास ऑन टेस्टबुक ऐप. इस पे आप क्लिक करोगे, आपको जितनी भी मास्टर क्लासेस पास्ट में हो चुकी हैं वो भी दिख जाएंगी, जो आपकी अभी होने वाली हैं वो भी दिख जाएंगी. देखो, लाइव टुडे एट 2 PM, ये जो आपकी आज की मास्टर क्लास है वो स्केड्यूल्ड है ऑलरेडी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. टेलीग्राम चैनल का मैं आपको नाम बता देती हूँ. दोज ऑफ यू हु आर नॉट कनेक्टेड विद मी देयर, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं. वहाँ पर आपको जितने भी फ्री क्लासेस हैं उसके PDFs भी मिल जाएंगे. ठीक है, टेलीग्राम चैनल इज कॉल्ड आयशा मैम टेस्ट बुक. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. जितनी भी आपकी यूट्यूब एंड मास्टर क्लास में क्लासेस होती हैं, यूट्यूब प्लस मास्टर क्लास में जो आपकी क्लासेस होती हैं, उसके आपको PDFs कहाँ मिलते हैं? ऑन दिस टेलीग्राम चैनल. इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास की नोटिफिकेशंस भी मिलती हैं, so that you don't miss any of the free classes. जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उनका मैक्सिमम फायदा उठाया करो. ठीक है, यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं.
once we complete this particular paper, जो आपका December 2023 का पेपर हो रहा है, once we complete the paper, I will send the entire PDF in that particular group. इससे पहले जो आपके पेपर सॉल्व किए हैं हमने, उसका आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा अंडर द मीडिया सेक्शन, मीडिया फाइल्स के अंदर आपको ऑलरेडी वो सेंड किया हुआ है, ठीक है. चलिए, अच्छा होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ. होमवर्क फॉर टुमारो इज, there's a very famous quote by a writer. You need to tell me the name of the writer in the comment section. मैं आपको कोट बता देती हूँ, कोट क्या है, ठीक है. कोट उन्होंने क्या कहा था, अब अपनी लाइफ के बारे में कहा था. He said how I used to toy with that tiger life. How I used to toy, to play with that tiger life. Which English writer made this particular comment when he was reflecting back on his past life. When he was reflecting back on his past life, he made this comment. He said, how I used to toy, I used to play with that tiger life of mine, how I was so reckless with my life back then. This is a statement made by who? Homework आप कहाँ करेंगे? Your homework has to be done in the comment section, and I do expect all of you to do the homework, because homework questions में से आपके questions पूछे गए हैं, ये आपको पता भी है, अगस्त एग्जाम में आपके questions आए थे. homework कैसे करेंगे? In the comment section put down your answer. Whatever your answer is, make sure to put down your answer. Before we begin with the new next आपका जो YouTube class होगा, उससे पहले we will have a look at the answer, ठीक है. all right, चलिए. Aniket says, ma'am, I'm beginner for UGC NET English Literature. How do I solve PYQs? Please help. Aniket, मैं आपके लिए ही बता रही थी. आप क्या करेंगे? YouTube चैनल पे जाइए, ठीक है. जो मेरा YouTube चैनल पे आप जाएंगे तो पूरी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाती है बच्चे. देखिए, आपको एक पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा. प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, यू स्क्रॉल डाउन, एक आपके पास प्लेलिस्ट आएगी जिसमें 61, 62 आपके पास क्लासेस हैं सो फार, ठीक है. 61 या 62 के अराउंड आपके पास क्लासेस हैं. ये देखो 62 क्लासेस हैं. व्यू फुल प्लेलिस्ट करो. जितने भी हमने सो फार प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, जो आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, सारी क्लासेस आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. हमने काफ़ी सारे 2024 के जितने भी पेपर्स थे, जून का पेपर है, अगस्त के पेपर्स हैं, सितंबर में एक पेपर हुआ था वो पेपर है, वो सारे हम सॉल्व कर चुके हैं. यू कैन कवर ऑल दीज क्लासेस यहाँ से, प्लस मास्टर क्लास से, दोनों से कंबाइंड आप जितने भी क्लासेस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं. प्लस जितनी हम अब करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व, PYQ सॉल्व करने वाले हैं, उनको आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं इन द लाइव क्लासेस, ठीक है. I hope this has been useful. I will see you people very soon. Till then, make sure to keep studying. Do your homework and good luck, students.